Assalamualaikum. In today's lecture, we are going to discuss the last phylum of the animal kingdom, that is Phylum Chordates. इनका introduction discuss कर लेते हैं. They are the most successful, most adaptable, and most widely distributing animals. Chordates have four basic characteristics. चार basic characteristics होते हैं chordates के. कौन-कौन से हैं? Number 1 is the notochord. Number 2 is dorsal hollow nervous system. Number 3 is gill slits. And number 4 is postnatal tail. Now we are going to see a diagram that encompasses all these four characteristics of chordates. सबसे पहले आप देख सकते हैं ग्रे कलर का आपको एक नोटोकॉर्ड नजर आ रहा है इसकी बॉडी के अंदर और उसकी पोस्टीरियर साइड पे डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है. देन देयर इज पोस्टनेटल टेल एंड द फेरिंजियल और गिल स्लिट्स. नोटोकॉर्ड को सबसे पहले डिस्कस करेंगे. इट वाज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉर्डेट्स. इट इज अ सॉलिड अनजॉइंटेड रॉड. एक सॉलिड अनजॉइंटेड रॉड होता है. It is located in the mid-dorsal line. Mid-dorsal line में located है. Between the gut and the central nervous system outside the coelom. Coelom के बाहर located है. Gut और central nervous system के दरमियान में located है. The notochord serves as an axial skeleton. Axial endoskeleton के तौर पर serve कर रहा है. They are used to give support to the body and providing space for muscle attachment. किस लिए use होते हैं? एक तो body को support देते हैं और दूसरा they provide space for muscle attachment. In some lower chordates, the notochord is partially or wholly replaced in adult state by a jointed backbone or vertebral column. Lower chordates में क्या होता है कि notochord को replace कर लिया जाता है partially या wholly एक backbone से या vertebral column से. Second characteristic of chordates is the dorsal hollow nervous system. Central nervous system of all chordates consists of a single tubular fluid-filled non-gangliated nerve cord. It is situated along the mid-dorsal line. Mid-dorsal line के along situated है. It is present between the notochord and outside the coelom. Coelom से बाहर located है और notochord के दरमियान में located है. अब हम एक dorsal hollow nervous system की डायग्राम देख लेते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो कलर का आपको एक नजर आ रहा है dorsal hollow nerve cord. ये posterior side पे located है notochord के. Third characteristic of chordates is their gill slits. Gill slits क्या होती हैं? They are basically paired perforations. They are present on the lateral sides of the anterior part of the body. Lateral side पे present है body की अगली surface पे. It leads from pharynx to exterior. Pharynx से external environment की तरफ lead करती हैं. The fourth and last characteristic of chordates is the postanal tail. Postanal tail क्या होती है? Extend करती है beyond anus. It is present at least in embryo. अगर वैसे present नहीं भी है तो embryo stage में present होती है. It regresses into tailbone in humans. Humans के अंदर tailbone के अंदर suppress हो जाती है. We are going to discuss the practice question related to the chordates. The statement of the very practice question is pharyngeal pouches is another name for which characteristic feature of chordates. Pharyngeal pouches जो है वो किस characteristic जो है chordates का उसका दूसरा नाम है. Option A is dorsal nervous system. Option B is gill slits. Option C is postanal tail. And option D is notochord. Solution की अगर बात करें practice question के तो correct option बन रहा है B option. That was gill slits. Gill slits have another name called pharyngeal pouches. Pharyngeal slits भी बोलते हैं, pharyngeal pouches भी बोलते हैं. ये दोनों gill slits का दूसरा नाम है.
आई होप आपको कॉर्डेट्स की और उनके करेक्टरिस्टिक्स की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।